Moving to our next question, like campuses, ये सबका मेन क्वेश्चन है. आफ्टर बीएससी आईटी के कैंपस और आफ्टर एमसीए के कैंपस क्या डिफरेंस है? बीएससी आईटी के कैंपस में इफ मैं बोलूँ तो बीएससी आईटी के कैंपस में क्या होता है, हम जब ग्रेजुएट होते हैं तो कंपनीज विल कम एंड दे विल हायर बल्क. राइट. ठीक है, वो बल्क में हायर करते हैं. बल्क में हायर करेंगे तो ऐसा होता है लाइक टेक महिंद्रा आई, इन्फोसिस आया, विप्रो आया, दे विल से लाइक 2 years bond, 4 years bond, you need to come here, I'll give you 2 lakh to 2.5 lakh. Right, right. So it is like वो जैसे भाजी खरीदते हैं, right. ऐसे वो मंडी में जाके ये इतनी भाजी खरीद ली उन्होंने और वो सबको ले लिया. चलो चलो ठीक. स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में. मैं आपका होस्ट राहुल सावंत. सो आज का जो वीडियो है करियर रिलेटेड. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो आज के हमारे जो गेस्ट है वो है दीपक. हाय. तो हमने कुछ क्वेश्चन नोट डाउन किया है जो हमारे व्यूअर्स का डाउट क्लियर करेंगे. तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. Yeah, sure. Thank you so much for having me on your show. So, मेरा नाम दीपक दुबे है and मैं as a senior software engineer काम कर रहा हूँ and मैंने BSC IT किया हुआ है and BSC IT full time किया था. उसके बाद part time MCA मैंने pursue किया while doing the job. So ये मेरा overall technical background है that I'm a senior software engineer with the .NET background and मैंने कॉलेज किया है राम निरंजन झुंझुनवाला कॉलेज से जो कि घाटकोपर में है. एंड मेरा फैमिली बैकग्राउंड अगर मैं बताऊं तो मेरे डैड हैं जो रिक्शा ड्राइवर थे, अब वो नहीं चलाते बिकॉज आई एम वर्किंग सो ही इज रिटायर्ड नाउ. मेरी मॉम है, शी इज अ हाउसवाइफ एंड एक एल्डर ब्रदर है, ही इज वर्किंग एज अ प्रोफेशनल and 2 younger sisters who are studying currently and this is the overall about me. Okay, so very well answered. Moving to our next question, like आपने कहा आपने MCA किया, right? So एक brief introduction about what is MCA. So MCA is if I say that everybody knows, maybe the full form of MCA is Masters in Computer Application. Right. So basically it is a technical post-graduation degree where you learn about programming skills. That there are multiple subjects which you choose and which you master too. Like AI is there, programming, basically programming towards the C# and Java. AI is there, Python is there. So there are multiple programming things are there which being taught in MCA. Okay. So ये चीजें हैं MCA में. Okay, so very well answered again. Moving to our next question, like which students of what background can opt for MCA? Basically, if you do any we say like any graduation degree from BCom or BSc, right, then you can opt for MCA. But if I would suggest that if you are doing MCA, you should have some technical background already, and then you should pursue for MCA. Because what happens, like आप अगर बीकॉम कर लेते हो और बीकॉम करने के बाद में आप एमसीए में जाते हो तो आपको प्रोग्रामिंग और टेक्निकल नॉलेज इतना नहीं होता, right, जिसकी वजह से आप बाद में स्ट्रगल करोगे एंड यू वोंट बी दैट मच गुड. बट इफ यू आर एंथुसियास्टिक कि हाँ नहीं मैं कर सकता हूँ तो आप डेफिनेटली आपको एमसीए करना चाहिए. वेरी वेल आंसर्ड. तो मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है, लाइक बैचलर्स लाइक बीएससी आईटी से एक स्टेप फॉरवर्ड है एमसीए, राइट? यस. सो जो लेवल है वो एमसीए का और इंक्रीज हो जाता है, लाइक कोडिंग में और अप हो जाता है, राइट? तो उसके बारे में आप क्या बताओगे, लाइक क्या अपना प्रिपरेशन रखना पड़ेगा? प्रिपरेशन मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि अगर आपको एमसीए परस्यू करना है और आपने बीएससी आईटी की हुई है एंड आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कुछ टेक्निकली, तो मेरा ये सजेशन रहेगा लाइक व्हाइल डूइंग दिस यू शुड ऑलवेज लर्न अबाउट प्रोग्रामिंग एक्सेप्ट योर करिकुलम. जैसे आप कॉलेज में तो पढ़ ही रहे हो बट कॉलेज में हम जो पढ़ते हैं वो थियोरेटिकल होता है. Exactly. अगर हमको प्रैक्टिकल करना है तो हमको खुद से सीखना पड़ता है, सो हम लोग वो अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे. Very well answered. So moving on to our next question, like is there any competitive or entrance exam for MCA? Yes, MCA के लिए normally competitive exam है which is MCA. So CT exam आपको क्रैक करना पड़ता है where you have just logical reasoning and vocabulary English.
ये 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, इन्हीं के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आते हैं उसमें, जो कि आपको आंसर करने होता है, एंड विच इज वेरी इजी एज पर मी. एंड इफ यू डू फुल टाइम MCA, percentile wise you get the college allocations. And if you do part time, so part time mein you won't struggle that much. It's like you need to give the exam and you will be selected to your Mumbai University College. Basically it provides. Right. Yeah. So as you said about percentile, right? So what would be the percentile, right percentile for having admission in above 90? You know that percentage and percentile both are different. Right. So in percentile, if you go, so it should be above 90 always. Right. So you will get a good college. Like colleges हैं, विवेकानंद कॉलेज है, BGTI कॉलेज है, तो ये लोग प्रोवाइड करते हैं. दे आर वेरी गुड कॉलेज इन ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स. राइट. तो ये लोग प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं. वेयर इन BGTI you already know that they like Google, Amazon, these companies come over there. Right. तो वो चीज है. बट अगर आपको ज्यादा अच्छा कॉलेज चाहिए तो you should score well. Very well answered. So now you said about colleges. Like आपके हिसाब से what are the top colleges for doing MCA? मेरे हिसाब से top colleges हैं विवेकानंद, which is in Chembur. Right. And then BGTI है, जो माटुंगा में I think so. Right. उसके बाद एक कॉलेज है विले पार्ले में, I do not remember the name. NMIT और उसी में है. NMIT. तो वहाँ पे है. और एक भाईखला में एक कॉलेज है, मेरे को नाम याद है उसका. हाँ, विद्यालंकार भी है, which is in वडाला. Right. तो विद्यालंकार है और वो भाईखला वाला कॉलेज. So these are some colleges where you can go and opt for it, but I am not sure ये due to COVID क्या हुआ है, placements आए हैं कि नहीं आए हैं. But पहले मेरे like my friends were there in Vivekanand, they used to get good packages. Right. So we'll move to the next question. Like, what are the main core subjects students should focus on in MCA? In MCA, basically, student should focus. He should select at least one programming language first. Right. Whether he want to go for Python, Java, .NET, anything, but he should go for that. Yeah. That is for sure. And उसके साथ साथ आपको आपका बेस क्लियर करने के लिए जो C# और OOPS concepts होते हैं, right, वो क्लियर रहने चाहिए. Data structure concepts. So data structure is different, algorithms and OOPS concept. Right. 3 things you should know very well, because क्या होता है कि these are the base. Right. And if you want to be a pro programmer, or in local language people says like third programmer. Yeah. So उसमें क्या होता है कि वो बनने के लिए आपको data structure, algorithms and OOPS, this should be mastered. Right. And then you can easily crack Google's interview or Amazon's interview, anything. So very well answered. Moving to our next question, like campuses, ये सबका main question है. After BSC IT के campus और after MCA के campus क्या difference है? BSC IT के campus में if मैं बोलूँ तो BSC IT के campus में क्या होता है, हम जब graduate होते हैं तो companies will come and they'll hire bulk. Right. ठीक है, वो bulk में hire करते हैं. bulk में hire करेंगे तो ऐसा होता है like Tech Mahindra आई, Infosys आया, Wipro आया, they'll say like 2 years bond, 4 years bond, you need to come here, I'll give you 2 lakh to 2.5 lakh. Right. So it is like वो जैसे भाजी खरीदते हैं, जैसे वो मंडी में जाके ये इतनी भाजी खरीद ली उन्होंने और वो सबको ले लिया, चलो ठीक है. But MCA is a choosy where like you already filtered from BSC IT, now you are going to MCA. Right. So they go and they choose wisely. Okay. और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे they'll come, they'll evaluate. There'll be 3 rounds of interview. As per I know, 3 rounds of interview will be there, and the companies are very good. Like Namura, it is a very big financial company. Okay. In IT sector, so they also provide good package, and the interview is very hard. Okay. Because one of my friend was there, so उसने मेरे को बताया था कि like they ask technical questions as well, and they ask some logical question in that particular manner where these kind of questions has been asked in IAS or IPS exam. So आपका logical वैसे strong हो जाएगा. Okay. I have a question where maybe in your comments users can give that answer. That if I have a cake, okay, round shaped cake, right, and you have only 3 cuts. Okay, you need to cut that cake in 3 cuts only. Yeah. 3 cuts only, and you should have equal 8 pieces in 3 cuts. Okay. A round cake. Okay. A round cake with 3 cuts with 8 equal pieces. Yes. Okay.
So that is the question you need to answer in the comment section. So that'll be like, it is, if you answer it, it is good. But I had been struggling. Then I got to know after some. Okay, it is the answer. Okay, fine, it is good. But this is a good kind of questions. Logically, they ask. Okay. They improve. Okay. So इसका हम आंसर बाद में देंगे in the end of this video. Going to our next question. So currently you are working for which company and what is your role? Currently, I am working. I just recently joined. So, as a senior software engineer, where I have roles and responsibilities related to setting up the architecture and developing things. Okay. So basically, I'm onto that, and basically, I'm working as an CMS developer, CMS and commerce. Okay. Okay. So e-commerce you already know, right, yeah. and CMS, content management system. So I'm working both a platform developer. Okay. So my next question will be like, what is the environment like? I'll tell you one incident. So when I was in BSC IT, so I'll tell you frankly, I'm giving an interview, so I won't do any like big things, or I won't say anything. It is like I had 49% in 12th standard. So I was at a place when I went for an interview. I was sitting in the aptitude round. Right. So this is the first round which right. I was sitting. One guy from they came and he said that you're not eligible. Stand up and go out. Oh my god. And I was like, I was for a minute. I was like 55% was the eligibility criteria. I was having 49. Right. And I was like, why sir? Why you saying like that? So उन्होंने बोला कि no, rules are rules. Okay. तो मैंने बोला sir, I have one question. Genuinely you answer me, I'll go. Right. So he said, what? Tell me. I said, which physics and chemistry you gonna use in your company? Except maths and logic. Right. So he said, no, this is company policy. I don't know. Okay. And I was like, very bad. I felt very bad because in front of 60, 80 people, you just stood me up and you said, get out. Yeah. It is very bad. Okay. And nowadays, some days before, I asked for X amount of package to them. Right. And they agreed and they welcomed me. With the same percentage of 49, I entered as a full-time employee with a senior software engineer profile and into development. And if I would have been selected into that campus placement, I don't know where I would have been, like maybe in support or somewhere else. But this is the stuff where like you should not get demotivated that no, they throwed me out, I won't join that company again. It is not. Make that particular company to hire you. So perfectly answered. This is the best example for our channel, like never give up and keep trying. Yeah. So my last question, what is the piece of advice you would like to give to a young generation regarding joining the technical role, regarding cracking an interview? So see, first of all, it is like, if you want to crack an interview or if you want to just go in technical jobs, right? So as I said, like you should be thorough about your profile. But in my case, it was not the case. Okay, so I was not having. I wanted to do medical. Right. Okay. I wanted to become a doctor, but as I said, like my father was a rickshaw driver. We cannot afford 3 or 4 lakh rupees yearly fees. Yeah. So my father told me that Deepak, you do engineering. Right. So engineering fees was 1 lakh rupees. Yeah. So I got 49%. I was not having confidence that will I get an engineering seat in any college. Right. So one of my friends said you'll get in Karjat, Kasara or somewhere over there. And I was from that batch where everybody got less percentage. I was in 2013 batch where physics paper got changed and government said that everybody will be passed from in physics paper. Okay. So that batch I was. And then what happened, my dad gave me 2000 rupees. He stated that buy a kit for this engineering admission thing. Yeah. And I was like, my dad cannot pay the fees and why I should put a burden on him. Right. तो मैंने क्या किया, वो 2000 रुपए उड़ा दिए. ठीक है, तो मैंने क्या किया, वो 2000 रुपए उड़ा दिए. अब 2000 रुपए उड़ा दिए, मैंने कहीं एडमिशन नहीं लिया. Right.
लास्ट में जाके एक कॉलेज में गया विच इज इन भांडुप। फर्स्ट ईयर मैंने वहां से किया था डीएवी कॉलेज। ओके। मैं गया वहां पे एक सर थे, गुप्ता सर एंड माने सर, द प्रिंसिपल्स। राइट। आई लाइक फोल्डेड माय हैंड एंड आई सेड सर आई डिड नॉट फिल द फॉर्म, कैन यू प्लीज अलाउ मी टू गेट एडमिट। या तो उन्होंने बोला कि पहले 2-4 क्वेश्चन पूछे, क्या हो गया, कैसा हो गया, इमोशनली थोड़ा मैंने उनको बोला वी आर पुअर एंड ऑल। ही सेड ओके। ही वाज वेरी ग्रेट दैट ही गेव मी एडमिशन। मैंने 1 साल वहां पे पढ़ाई की, उसके बाद मैं आरजे में स्विच किया। मैंने आरजे में स्विच करने के बाद मैं निकल गया और मेरे हाथ में जॉब थी मई में। आई वाज हैविंग अ जॉब एंड वो टेक्निकल नहीं थी। ओके। लाइक प्लेसमेंट ऑफिस से ही मिली, कॉलेज कैंपस से ही मिली, बट उन्होंने बोला कुछ और दिया कुछ। राइट। तो ये नॉर्मली होता है कि वो बोलेंगे कुछ और मिलेगा कुछ। राइट। तो मैं 2 महीना वहां पे मैंने काम किया एंड 2 months were like, those 2 months were for me, it was like a jail. Okay. I used to sit on my machine, I used to open a calculator and I used to multiply 60 by 8 hours, 60, and then the total calculation by 60. I used to convert into seconds, that 8 hours, and I used to minus 1. I was that much bored because that job was not for me. Right. So I struggled and I searched for job. I went here and there, and now the virtual interviews are more. Yeah. That time walk-ins were there. Right. I went one place, they took my interview, I cleared everything, they didn't call me. Exactly. So these things happen. Like people will call you, you will give the interview fully, you'll have a confidence कि नहीं मैं select हो गया हूँ, but आपको वो call नहीं आएगा. Right. कोई भी रीजन हो सकता है, कंपनी का रीजन हो सकता है, या फिर वो भूल गए हो, एनीथिंग, बट डू नॉट लूज द होप। मैंने लूज कर दिया था होप। इट वाज अ टाइम ऑफ नवंबर वेयर आई थॉट दैट आई वोंट डू दिस जॉब। राइट। लाइक आईटी नहीं होगा मेरे से। ओके। एंड आई वाज नॉट, मैं प्रोग्रामिंग में भी इतना खास नहीं था। तो मैंने क्या सोचा कि देयर इज अ प्रोफाइल कॉल्ड एमआर, राइट? या, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। या। तो मैंने सोचा लेट्स डू एमआर, देयर इज गुड मनी इन दैट। स्ट्रगल नहीं पता था मेरे को उसमें क्या है, बट गुड मनी। तो मैंने, मेरी भाई के फ्रेंड थे, मैंने उनको कॉल करा, मैंने बोला भाई आप इंटरव्यू शेड्यूल करा सकते हो? तो उन्होंने कहा ठीक है मैं करा दूंगा। एंड दैट डे ओनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन कंपनी दैट यू कम एंड गिव एन इंटरव्यू। ओके। So I was in 2 pathway where I need to go to MR or IT. Yeah. I choose the IT again. I said I'll give the interview and let's see. I went, I gave my interview. That time my hairs were big. Yeah. It is curly, it was big. I went, I gave the interview properly and they stated like everything was good except one thing. I was like, what? So the HR said that the CTO didn't like your hair. Arre baap re. I was like, I didn't find it, like what should I say? Then he said like, you need to cut that. I said चलो घर की खेती है, काट लेंगे। हाँ, मैं बोला मैम आप बोलो मैं टकला हो जाता हूँ। I'll come, तो IT का जॉब चाहिए। And literally I went, I cut my hair. I joined on 21st November. My first technical job as a trainee developer. Okay. And from there I started learning, and my logical things were good. I started learning, and that time, you know, like hopes, we lose hopes, we get the hopes. It is that, but never, if you have the will to do, you can do, but you need to just churn the things that हाँ करना है, हाँ करना है, हाँ करना है, एक चाहिए। And nowadays freshers को opportunities बहुत कम मिलती हैं या फिर कम मिल रही हैं। I don't know what is the case, but लोगों को experience चाहिए। Right. ठीक है, लोग बोलते हैं अरे 1 साल तो एक्सपीरियंस लेके आया। मैं कहाँ से लेके आऊँ? मैं पैदा होते ही आईटी वाला एक्सपीरियंस लेके आया था क्या? तो वो चीज है, बट थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है आप लोगों को। मैं वही बोलूंगा, लाइक मैं अपनी बात बताऊंगा, मैं एक टाइम एमआर में जाने वाला था और आज सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। विथ आई कैन टेल यू दैट आई हैव सफिशिएंट पैकेज फॉर मी, आई कैन रन माय फैमिली इजीली। ओके, सो होता है क्या कि हम लोग अगर होप लूज कर देते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, राइट, बट एक कहीं ना कहीं पे वो होता है कि नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा। लाइक I'll tell you some things where like you need to do, like नौकरी अपडेट। नौकरी में डेली विजिट करके सर्च करके अप्लाई करो। इससे क्या होता है, आपका प्रोफाइल है ना, जैसे गूगल सर्च एसईओ होता है ना, तो वैसे ही आपका प्रोफाइल भी नौकरी में आप आता है जब आप एक्टिव रहते हो नौकरी पे।
ठीक है, फर्स्ट थिंग दैट। सेकंड थिंग, जब आप अप्लाई करते हो तो आपको अपना मेल थॉरली चेक करना पड़ता है कि लाइक आपको रिस्पॉन्स आ रहा है कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए, तो वहाँ पे आपको मेल्स या नंबर्स लिस्टेड होंगे। डू नॉट हेजिटेट टू कॉल। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, आपको गाली दे के बंद कर देगा फोन, वही ना, बट एटलीस्ट अगर सामने वाला अच्छा होगा वो सुन लेगा और इंटरव्यू के लिए बुला लिया तो पॉसिबिलिटीज आर देयर। सी, तो वो कॉल करो, मेल करो दैट सर और मैम आई हैव बीन शॉर्टलिस्टेड, सो व्हेन आई कैन कम फॉर इंटरव्यू। गो एंड गिव द इंटरव्यूज। एज मेनी इंटरव्यूज यू गिव, दैट मेनी पॉसिबिलिटीज यू इंक्रीज फॉर योरसेल्फ। दैट मैंने दी थी, मैंने तो 25-30 इंटरव्यूज दिए थे, उसके बाद जाके एक लगा। उसके बाद से मेरा रिकॉर्ड है, मैंने वो फर्स्ट जॉब छोड़ने के बाद से मैंने फर्स्ट इंटरव्यू ही क्रैक किया है। मैंने कभी भी दूसरा, मैंने दिया है दूसरा इंटरव्यू, बट एक क्रैक करने के बाद दूसरा दिया तो मेरे पास 2-2, 3-3 ऑफर हो, इसलिए। राइट, मल्टीपल ऑफर्स के लिए। बट मैंने अभी तक उसके बाद से करियर में खाली शायद 1 या 2 ही इंटरव्यूज होंगे जो मैंने क्रैक नहीं किया होगा। बट यही है कि लाइक एंड ऑलवेज लाइक आप एक बार जब जॉब पे लग भी जाते हो ना, तो आई एम नॉट सेइंग दैट कीप ऑन स्विचिंग, डोंट स्विच। इफ यू फील, इफ यू आर कंफर्टेबल देन स्विच, बट कीप ऑन गिविंग द इंटरव्यूज। व्हाई? यू विल बी एबल टू नो द स्टैंडर्ड ऑफ द इंडस्ट्री, लाइक लोग क्या पूछ रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। बिकॉज क्या होता है, लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं। अरे यार बस हो गया, कौन स्विच करेगा, इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा मेरे से भाई। तो इट इज लाइक जब आपसे इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा तो आप वहाँ पे सेटल हो जाओगे। तो आपको वो 4 रुपए दे या 40 रुपए दे, आप उसी में खुश में रहोगे। राइट सर प्लीज, वो नहीं चाहिए। तो ऑलवेज कीप ऑन गिविंग द इंटरव्यूज, सो आप उसके लिए उतना प्रिपेयर्ड रहो कि हाँ ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, आप यहाँ तक मार्क तक पहुंचे हो, एंड देन यू कैन यू शुड स्टे हंग्री इन द जॉब्स फील्ड। ओके, सो आई गेस हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्ड हो चुके हैं। Once again, thank you for your time. Thank you. I hope you like this video, and the answer which we'll tell you on Instagram. Thank you so much.